सो आमे जो डेवऑप्स फ्लोटा देखिथिले राइट कंप्लीट डेवऑप्स लाइफ साइकिल देखिथिले ता भीतर Ansible हमर कोठी आसुची ना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट राइट सीडी पार्ट रे हमें Ansible रखिथिले कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट पई तो हमें देखिबा Ansible टा कोन और कोन पई एटा यूज होची तो Ansible खाली कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट पई यूज होनी द मल्टीपल अदर पर्पस रे भी यूज होची तो फर्स्ट देखिबा हमें Ansible कोन Ansible is an open source automation tool designed to simplify IT task साधारण कथा आम बुझे गोटे ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल जोटा कि आईटी टास्क सब ऑटोमेट करबा पई यूज हुए आईटी टास्क कौन ना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सच एज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट माने जो एप्लीकेशंस डेवलपर माने कोन डेवलप करिथिबे ताकू आमे गुड जगह होस्ट करिबा बा डिप्लॉय करिबा तो सेति पे आमे कोन Ansible दरकार करिबा Ansible हमरो दरकार पड़िबो तो ता सहित हमको कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग करबा पे आमे ईच जो डिटेल्स आमे देखिले सबु जगह डिटेल्स को आमे कंप्लीट वे रे केमती प्रत्येक पार्टा राइट जेमती कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग पूरा डिटेल्स रे छानिबा okay how much it's widely used for automating repetitive tasks and managing large scale systems with ease about easily we can automate this the repetitive task जो टास्क का बारंबार हमें यूज करूचे राइट सेटा को हमें कोन ऑटोमेट करि परबा बाय यूजिंग द Ansible राइट सो आर कोन की फीचर्स अछि Ansible रो Ansible कौन ना गोटे एजेंटलेस माने कौन एजेंटलेस माने हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बाय एजेंट गोटे हमको दरकार पड़िबनी जेमति कि हमें जेनकिंस रे देखितले राइट मास्टर एजेंट सेटअप रे हमें देखितले जेनकिंस रे कोन गोटे एजेंट यूज करूतले बा agent.jar गोटे प्रोग्राम इंस्टॉल करूतले आनिकरी यूजिंग दैट agent.jar हमें कोन करूतले कनेक्ट करूतले जेनकिंस को राइट तो जेनकिंस कोन करतला किछि टास्क एग्जीक्यूट करथला एजेंट सर्वर तो बट एठी कोन होची ना Ansible रे हमें कोन कनेक्ट करिबा नोड को बाय यूजिंग द SSH सेति में एटा एजेंटलेस अनलाइक सम ऑटोमेशन टूल्स Ansible does not requires agents installed in the managed system तो हमको एजेंट इंस्टॉल करिबा दरकार नहीं थर्ड पार्टी एजेंट दरकार नहीं बा टूल्स बा प्रोग्राम्स किछि दरकार नहीं हमें खाली SSH सिक्योर सेल communicate करिबा from one server to another server आ कोन होची डिक्लेरेटिव लैंग्वेज जेमति कि हमें डिक्लेरेटिव मेथड यूज करथले कोडी जेनकिंस रे जेतले हमें पाइपलाइन स्क्रिप्ट लेखुतले तो डिक्लेरेटिव वे रे बहुत इजीएस्ट वे रे राइट गोटे डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करथले राइट डिक्लेरेटिव स्क्रिप्ट लेखि गिरी जेनकिंस फाइल रे तो सेठी एठी भी सेमति हमें यूज करबा कि डिक्लेरेटिव लैंग्वेज आ सेटा भी YAML फाइल रे हमें ले The YAML file which na yet another markup language. So tasks are written in YAML using playbooks, which is easy to read and write. Both easy and next, scalable and efficient. Ansible can manage thousands of systems simultaneously without complex setup. माने बिना complex setup रे हमें केमती 1000 systems at a time connect करी सेटअप करी पाएगा okay completely orchestrate we can do complete orchestrations by using the Ansible okay modular architecture so it comes with pre-built modules for common tasks that is file management package installations right and allows custom modules so modular architecture कौन कहला ना it comes with pre-built modules तो हमें जतले Ansible रे काम करिबा गाइस सेतले हमें कोन देखिए ना बहुत सारा मॉड्यूल यूज करिबा तो मॉड्यूल इज नथिंग बट सम प्रोग्राम्स ओके पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स ताकू हमें केमती यूज करी राइट जेमती कि हमें जेनकिंस रे देखितले कोन प्लगइन्स राइट इट्स अ piece of program or software to use to enhance the feature
of that particular tool. तो similarly हमें modules use करके Ansible रे कौन छोटो मोटो जो task अच्छी complete entire tasks we can execute. Okay, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ଆମର modules ବି ଆମେ ଲେଖି ପାରି. Okay, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ की फीचर्स सब थिला. तापर देखिए हम यूज केसेस माने को जगह हम याको यूज करिबा. तो मेन यूज केसेस कोन रोची Ansible रो ना प्रोविजनिंग सर्वर्स एंड कॉन्फ़िगरिंग एनवायरनमेंट. सर्वर प्रोविजनिंग माने आमे देखो तो EC2 इंस्टेंस रे जेतो हम किछि सर्वर दरकार हमें कोन जस्ट लॉगिन करछे AWS कंसोल को आ मैन्युअली किछि सर्वर सेट करूछे सर्वर क्रिएट करूछे राइट तो प्रोक्योर करूछे तो सेतबले कोन हमकु किछि सेटअप करिया पड़ियो माने किछि सिलेक्शन करिवा पड़ियो कोन हमकु दरकार कौन इमेज हमें सिलेक्ट करिया कौन सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करिया कौन हार्डवेयर सिलेक्ट करिया नेटवर्क कौन सिलेक्ट करिया सब जगह हमें मैनुअली सिलेक्शन सरला परे हमें लॉन्च करूथले. तो गोटे दुईटा सर्वर इट्स ओके इफ मोर देन 4 5 or 10 servers to procure with different configurations or same configurations तो हमें जदी मैनुअली करबा हम बहुत टाइम लागियो राइट. तो सेते में हमें कोन Ansible यूज करि परिबा टू provision the servers automatically. तो provision माने procure करिवा बाय करिवा बा रेंट रे नबा तो आनी साइला परे ताको हमें configure भी करि परिबा. We can do the configuring the environments. Okay, and orchestrating multi-tier applications जहां भी applications हमें deploy करिवा बा install करिवा जहां भी डेवलप करिबा एप्लीकेशंस सर्वर रे तो हमें ऑर्केस्ट्रेट करि परिबा. ओके, डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन एंड अपडेट्स एप्लीकेशंस हमें डिप्लॉय करि परिबा. वी कैन अपडेट्स ऑटोमेटिंग रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जोटा डे टू डे रूटीन टास्क रोची राइट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ताको कोन करिबो ना हमें ऑटोमेट करिकरी से टास्क जोटा डेली टास्क डेली चेक्स थाए कंपनी माने का राइट. तो किसी सर्वर चेक्स करिवा पई किसी सर्वर स्टार्ट करिवा पई रिस्टार्ट करिवा पई तो किसी सर्वर माने हेल्थ चेक रिपोर्ट आनिवा पई तो से जो डेली टास्क सब रोची से सब टास्क रो मैनुअली करिया भी हम डू दैट. मैनेजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन AWS Azure क्लाउड गूगल क्लाउड एटसेट्रा राइट. तो माने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा कि हमर प्रोविजनिंग जोटा हमें देखितले कथा होतले राइट प्रोविजनिंग विषय रे जो एटा हमर मैनेजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जेकोनसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए Ansible रे मैनेज करि परिबो. ओके, देन व्हाई वी नीड Ansible जोटा कि मैं वर्तमान जानले तार यूज केसेस इस तरह रोची राइट डिप्लॉयिंग एप्लीकेशंस कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट ए सब काम करिवो तार यूज केसेस रे हमें देखिबा वर्तमान काहे कि हमें Ansible को यूज करिवा राइट. तो सपोज एठी हमर 7 सर्वर्स अछि. ओके, 4 वेब सर्वर्स 3 DB सर्वर्स. ओके, तो ये जो चारटा वेब सर्वर अछि चारटा वेब सर्वर रे धर सपोज हमें हमर किछि गोटे जो एप्लीकेशंस बनाउछि सर कंपनी रे सपोज एटा गोटे जावा एप्लीकेशन ई जावा एप्लीकेशन को हमर डिप्लॉय करिया अछि राइट. तो जावा एप्लीकेशन गोटे डिप्लॉय करिया रहले कोन दरकार गोटे चेकलिस्ट हमर कोन दरकार कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट. फर्स्ट थिंग हला जावा वर्जन्स एप्रोप्रिएट वर्जन सपोज जावा 17 वर्जन्स रे एप्लीकेशन ता बिल्ड हेछि हमें जावा 17 इंस्टॉल करिवा राइट. ता सहित हमको दरकार कोन सपोज एटा हमर माने कोन Maven 5 भी सपोज हमें बिल्ड सर्वर बनाउछे यदि हमको Maven इंस्टॉल करियर अछि राइट. तो हमें कोन करबा Maven इंस्टॉल करिया पई पर्टिकुलर वर्जन Maven इंस्टॉल हो राइट. यदि हमें किछि सर्वर को टॉमकैट सर्वर में वेब सर्वर बनाउछे देन हमें कोन टॉमकैट इंस्टॉल करिवा राइट. तो Maven एठी करनी जेतो हमें वेब सर्वर बनाउछे सपोज हमको टॉमकैट इंस्टॉल करियर अछि चारिटा वेब सर्वर हमें बनाउछे टॉमकैट तबरे किछि लाइब्रेरीज इंस्टॉल करियर अछि किछि बाइनरीज इंस्टॉल करियर अछि राइट. तो ई सब सॉफ्टवेयर्स हमें कोन चारटा वेब सर्वर रे इंस्टॉल करिवा राइट. सेही परी
जमते डीबी सर्वर रहला डाटाबेस सर्वर हमर डाटाबेस इंस्टॉल करिया इंस्टॉलेशंस करिया अछि सपोज हम यूज करूचे सीक्वेल सर्वर तो सीक्वेल सर्वर सब सर्वर रे डीबी सर्वर यूज हो सपोज हम यूज को जावा भी दरकार किछ एप्लीकेशंस कनेक्शंस पाई राइट त सहित लाइब्रेरी किछ बाइनरी किछ हमर इंस्टॉल कराबो तो एटी तीनटा सर्वर रे तो जदि हमें normal way रे installations करिबा without using Ansible, what will happen? So every time either the administrator or the DevOps engineer, okay, so what they have to do, they have to connect each machines and do the installations of the software. तो एटी कौन होची ना तो every time हमें कौन सर्वर को कनेक्ट करिबा इंस्टॉल करियो तापर कम आउट पळे से पुनी आउट सर्वर कनेक्ट करियो तो मल्टीपल सर्वर्स हमें जदी कनेक्ट करूचे इट टेक सम टाइम जदी गोटे सर्वर 30 मिनिट्स बा 1 आवर नेला सपोज 1 आवर नेला इंस्टॉलेशंस पाई तो सही हिसाब रे जदी 7 सर्वर्स तो हम टोटल 7 आवर्स कंज्यूम करूची आ आ भीतर भी चांसेस अछि कोन ह्यूमन एरर रो चांसेस भी रहउची ह्यूमन एरर चांसेस होची जोठी की हमें फर्दर जेतो डिप्लॉयमेंट हमें करिबा वी कैन फेस सम इश्यूज राइट सो ई सब जो मैनुअल हमें यूज करूचे ताको ओवरकम करिबा पई हमें कोन करिबा यूज करिबा Ansible तो Ansible रे कोन करिबा ना हमें सिंपल ए जो सब टास्क रहउची गोटे प्लेबुक स्क्रिप्ट लिखिबा प्लेबुक स्क्रिप्ट जोथरे कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिटेल्स जहाँ भी इंस्टॉलेशंस दरकार है कि सही सब हम एग्जीक्यूट कर दबा सब जगह सर्वर रे तो जोटा हमको 1 आवर लागू थिला मैनुअल इंस्टॉलेशंस करबा पय दैट विल रिड्यूस टू सपोज अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स ओके तो 7 सर्वर्स within 35 minutes or less than that or less than 35 minutes it will complete तो इठी हमें कौन कितने रिसोर्स सेविंग कले कितने टाइम सेविंग कले जो टाइम हमें सेविंग कले सही टाइम हिसाब रे हमें कौन करिबा सही टाइम हिसाब रे जल्दी कस्टमर को हमरो डिलीवर कर परिबा राइट तो सेति पई Ansible is being used in many companies for doing the configurations management and continuous deployment. Okay, so similarly DB server रे हमें कौन होरे playbook लिखि दबा से playbook information से स्टोर करी एग्जीक्यूट कर दबा तो भाबो एठी हमें 7टा सर्वर नै छी हमर अधिक सर्वर आसिला मल्टीपल सर्वर आसिला राइट मोर देन 50 सर्वर्स मोर देन 100 सर्वर्स आसिला तो सेठी हमें कोन करबा जदी मैनुअली करबा गोटे गोटे कनेक्ट करियो बट with Ansible we can orchestrate all these servers at one go directly हमें कोन करबा सब जगह सर्वर को installations करबा by using Ansible writing the playbook okay सेठी पे हमें Ansible यूज करबा मुझे बोला क्लियरली नेक्स्ट different operations by Ansible जोटे हमें देखुतले कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट जोटा की कौन कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट रे करा हुए ना इंस्टॉलेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस जोटा की सपोज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमरो गोटे किछि जावा इंस्टॉल करियर अछि तो जावा इंस्टॉलेशन सइला पर जावा रो होम डायरेक्टरी सेटअप करियर अछि धर टॉमकैट इंस्टॉलेशन सइला टॉमकैट इंस्टॉलेशन सइला पर तार यूजर क्रिएशंस तार फाइल क्रिएशंस तार फाइल कॉपी बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशंस करियर अछि तो सेतिर हमें कोन configuration management use करावछि तो operations Ansible हेति पे यूज configuration manage system settings and user account creation file copy file update सब जगह update configurations across multiple servers हेति पे हमें configurations management use करो so एटा Ansible provide कर operations second operations provisioning माने सर्वर प्रोविजनिंग सर्वर प्रोक्यूरमेंट करिया पाई राइट जहाँ भी सर्वर दरकार जेकोन सी क्लाउड प्रोवाइडर हो बा ऑन प्रेमिसेस हो तमे कोन करबा कनेक्ट करिकि हमें आम हिसाब रे हमें सर्वर क्रिएट करि परिबा
तो ऑटोमेटिक जो सर्वर क्रिएशन आम जो एडब्ल्यूएस अकाउंट एडब्ल्यूएस रे कौन EC2 जो इंस्टेंस क्रिएट करूचे तो मैनुअली किसी सिलेक्शन करूचे से हिसाब रे जाई कि हमें कौन सर्वर क्रिएट करूचे बट से सब प्रोविजनिंग हमें कौन करि परिबा थ्रू Ansible आल्सो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट तो हमार जहाँ भी कोड डिप्लॉयमेंट राइट applications development सरला पर जो कोड भी हमें डिप्लॉय करियर अछि then we can go ahead and deploy the applications by using the Ansible. Okay, so rollout updates and ensure zero downtime, right? किछि भी अपडेट्स करियर अछि तो रोल आउट करि परिबा किछि तो सेति में कोन जीरो डाउन टाइम माने हम किछि डाउन टाइम जणा पड़िबोनी राइट तो जीरो डाउन टाइम मींस जो डिप्लॉयमेंट बेसिकली करा जाए राइट तो सो बेसिकली if companies doing the deployment nowadays not like the legacy way right the old way if we'll go with the deployment हम जो देखिबा तो सेठी कोन होवे ना डिप्लॉयमेंट पूर्व कोन ना फर्स्ट को सर्वर को शट डाउन करा जाए सर्वर को शट डाउन करी पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट सरीला परे जाय कि से माने सर्वर को पुनी स्टार्ट करंती जोटी कि हमर एप्लीकेशन रन हो तो जति कि समय तांकर डिप्लॉयमेंट टाइम लागे सर्वर ऑफ थाए से समय हमर कोन applications available not થાય right તો મને મેસેજ ସବୁ પાઈતો right banking message like our applications will be down from this to this time right so on time તો ସେଇବେଳେ down થાય but using DevOps and different tools we can mitigate that problem जो भी डाउन टाइम आसुची ना तो we can get the zero downtime deployment तो हमକୁ କିଛି ଜାଣା ହିଁ ପଡିବନି that will be taken care by the tools. Okay, so automatic deployments for multi-tier applications application deployment so basically हमें वही ये दुईटा ऊपर फोकस करिबा configurations management and application deployment provisioning and other things will take care in the Terraform classes तो Terraform जेतो Terraform पढिबा आ गोटे टूल तो सेता हमें provisioning आ infrastructure automations केमति करिबा ता विषय जानिबा okay तो बेसिकली हमें दुईटा फोकस करिबा Ansible रे configuration management आ application deployment. Next comes orchestrations. So it coordinates the operations of complex systems, database, web server applications to manage dependencies and ensure all components work together. So orchestrations में help करे. Security और compliance में जेमति कि कोनोसी सर्वर रे हमर किछि पैचेस इंप्लीमेंट करियर अछि. तर गोटे छोटो पैचेस गोटे सर्वर रे दबर अछि किछि अपग्रेड करियर अछि. तो हमें जदि 100 टा सर्वर को अपग्रेड करिवा जदि मैनुअली करिवा बाबो केते टाइम लागियो राइट तो एटा कोन सेही सेम काम को हमें कोन कर Ansible रे प्लेबुक लेखिकरी इजीली within few minutes or hours we can do the complete or entire upgradations किछि भी पैच हो फायरवॉल हो जाबियो राइट तो ऑटोमेटिक सिक्योरिटी चेक्स पीरियडिकल सिक्योरिटी चेक्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जाबियो चेक करबा पे सब हम यूज करि परिबा infrastructure as code जोडे मु कहउतली provisioning and automatic provisioning and management of network storage resources compute resources ताको जंदी हमें केमदि मैनुअली जा सब क्रिएट करछे ताको हमें ऑटोमेट करि परिबा तो सेटाला हमर infrastructure as code ISC सेटा हमें Ansible वे करि परिबा but we will see all these things in our Terraform class okay तो monitoring and maintenance तो किछि भी जदि मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस हेल्थ रिपोर्ट्स किछि सर्विस स्टार्ट करियर अछि मेंटेनेंस करियर अछि रिपोर्ट किछि नवर अछि किछि मॉनिटरिंग करियर अछि किछि स्टेटस देन वी कैन डू दैट इन Ansible आल्सो ओके एते सारा ऑप्शंस हमें ऑपरेशंस हमें यूज कर पाइबा बट बेसिकली जेमति कहिले हमें दुईटा ऊपर ही फोकस करिबा जोटा बेसिकली मैक्सिमम कंपनीज दे यूज दिस फॉर कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन deployment. Okay. Then next comes important terms in Ansible. तो Ansible कौन important terms रहुची जेमति कि controller machine. Controller machine जोटी कि हमें जानी चाहिए already हमें Jenkins रे जानते right master machine by controller machine जोटी कि Jenkins install है जो but similarly in Ansible also जोटी Ansible install है जो machine रे सेटा हमर कौन control machine तक कहबा हमें controller machine. This is where your Ansible get installed and your controller machines helps enabling the provisioning on the servers that you manage. Okay. How mane rakhita control machines? We can only install Ansible on Linux machines. Okay.
You can only install Ansible in the Linux machines. Node machine कौन? Node machine होची, these machines will be used for deployment and installations. जो server रे हमें deployment करिवा, हमारा control machines रहिला जोठी Ansible install ହେଇची, ଆଉ बाकी जो servers रहिला ताको हमें node कहवा, node machines वा servers कहवा, node servers. तो जोठी की node machine रे हमारा real deployments करावा, जहाँ configurations करावा, सेटा होला node machines तक पड़े. Inventory कौन? Inventory रहउची जब जाक node machines store ହେଇकरी रहिबो inventory रे. So this is basically an initializing file which contains the information about the nodes or servers that you are managing. जो node वा node machines रे हमें काम करिवा, right? Real deployment और configurations management करिवा, तार complete informations कौन inventory file भितरे store ହେଇकरी, right? So it specifies the information specific to each node like IP address, तार domain name, तार complete username, complete details of inventory भितरे रहिबो. The playbook कौन? Nothing but the basic unit of Ansible executions. बेटे basic unit of Ansible executions, real commands. हमें कौन plays रे रखिबा, playbook रे store करी रखिबा. So से playbook रे जो executions रहिबो सेटा कौन play रे contain हबो. तो play टा कौन? Okay, playbooks are written in YAML and are easy to read, write, share and understand. YAML file रे हमें playbook लिखिबा. Okay. How plays कौन? Plays that हमें कहले it's a basic unit of Ansible executions. The main context for Ansible executions is the play. This is the main context where the Ansible will execute. This playbook object maps manage nodes, host tasks. The play contains variables, roles, and an ordered list of tasks and can be run repeatedly. Right? Playbook contains pledge. Okay, playbook contains pledge and this pledge contains the task. So the task is the block defines a single procedure to be executed on server like installing the packages and all. So ये जो task हमें कहले से task कौन है ना उड़े play भीतरे ही रहेगा. One playbook can have multiple plays and tasks. Okay, तो exact जो task हमें लिखिबा से task टा कौन गोटे छोटो ब्लॉक रहइबो जोटे की गोटे सिंगल प्रोसीजर थिबो जोटे की हमर कोनसी सर्वर रे हमें एग्जीक्यूट करबा, इंस्टॉलिंग, कॉपीइंग, कॉन्फ़िगरेशंस, डिलीटिंग समथिंग, राइट? तुम जहां भी चाहो तुम करि परिबो सेटा यूजिंग टास्क. हम देखिबा जेतले प्लेबुक लिखिबा से प्लेबुक रे केमती हमर प्ले लिखुचे, केमती टास्क लिखिबा इन YAML फाइल कंप्लीट डिटेल्स हम जानि. ओके, नेक्स्ट आसुची हमर Ansible workflow. Right? Let's understand. जहाँ भी हमें बर्तन बुझिले, right? Ansible केमती कोन माने कोन actually यूज होची कोन तारो complete details, right? तारो workflow टा बुझिबा. हमें inventory विषय रे जानिले, playbook जानिले, control machine जानिले, right? But सेटा हमें connect केमती जानछि, हमें जानछि agentless रे, right? तार हमें workflow विषय रे बुझिबा, Ansible workflow विषय रे. तो Ansible जो कोड इंस्टॉल होइछि, जोठी के हमर जोठी Ansible इंस्टॉल होइछि सेटा हमें कोन control machine कहबा. राइट? तो ये कंट्रोल मशीन रे हमर कोन अवेलेबल रहइबो? प्लेबुक आउ इन्वेंटरी. प्लेबुक आउ इन्वेंटरी हमर कोन ए मशीन रे कंट्रोल मशीन रे रहइ. तो प्लेबुक कोन हमर जो टास्क रहउची, राइट? लिस्ट ऑफ टास्क्स जोटे कि हम एग्जीक्यूट करबा नोड मशीन रे. आउ इन्वेंटरी कोन ना इट कंटेन्स द सर्वर इन्फॉर्मेशंस. इट कंटेन्स the server informations. ए केस रे कोन हो हमर केतरा सर्वर अछि? तीनटा सर्वर. तो इन्वेंटरी कोन करथियो ना ये तीनटा सर्वर रो आईपी एड्रेस स्टोर करथियो. नोड 1, नोड 2, नोड 3. तो कंट्रोल मशीन कोन को एडाला फर्स्ट इनिशियलाइजिंग फाइल जेतो हमें Ansible प्लेबुक गोटे रन करबा तो से कोन करबो ना फर्स्ट Ansible स्कैन करबो इन्वेंटरी को. इन्वेंटरी रे लिस्ट ऑफ नोड मशीन पाइला. तो फर्स्ट पाइला सपोज नोड 1 से कोन करिवो कनेक्ट करिवो नोड 1 को बाय यूजिंग SSH. ता भीतर हमें सेटअप करिया, हमें सिखिया केमती कोन सेटअप करिवा. SSH कनेक्ट कला परे कोन करबो ना ए प्लेबुक टा को पुश करि दबो. हमें जान छै एटा कोन पुश मेकानिज्म यूज करा होची, राइट? Ansible usage push mechanism. Remember Ansible usage push mechanism and other softwares, right? Similarly, आमे जेमती Ansible ऊपर बेसिकली पढ़छे सेही
type ro same category tools are also available in the market, similar tools जोटा कि आमे कहबा कोन safe, puppet, salt stack, right? कोन अछि safe, puppet ଆଉ salt stack, UCD आउची UCD urban code deployer एमती बहुत सारा डेवलपमेंट टूल अछि। इ सेफ एंड पपेट इवन सब यूज करंती कोन UCD एक्चुअली इज एजेंट बेस्ड, UCD एजेंट यूज करे, सेफ पपेट एजेंटलेस एजेंट यूज करन बट दे आर पुल मेकानिज्म फॉलो करंती। ओके तो हमें जानले Ansible follows the push mechanism ता माने कोन से प्ले बुक टा कोन पुश कर दो कोडी की नोड मशीन, राइट? पुश कर दबो नोड मशीन को। फर्स्ट आनला कोन इन्वेंटरी रु हमर सर्वर इन्फॉर्मेशन आनिला, कनेक्ट कला पर ए प्ले बुक टा को एठी पठे देला, ता पर ए प्ले बुक टा एठी पठला पर एठी से एग्जीक्यूट करिवो प्ले बुक बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशंस गिवन हियर। बुझी पालो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करिवो मशीन रे। तो सिमिलरली पुनी सेकंड कोन हला आ गोटे नोड इन्फॉर्मेशन आनला, पुनी कनेक्ट कला, एटा काम सरी गला, पुनी आ गोटे सर्वर को कनेक्ट कला, एटी तार कंप्लीट जहां भी प्ले बुक रे लिखा हितिबो से प्ले बुक टा पुनी एटी पळे आसला, तो एटी एग्जीक्यूट कला। सेम अगेन आ गोटे नोड पाइला, नोड 3, अगेन इट कनेक्टेड टू द नोड 3 एंड पुश द प्ले बुक। तो ये हिसाब रे कोन कंप्लीट Ansible काम करे, बहुत सिंपल वर्कफ्लो, राइट? किछि कॉम्प्लिकेटेड नै। इन्वेंटरी रु कोन सर्वर इन्फॉर्मेशन नेला, जो प्लेबुक लिखा है से प्लेबुक नै कि एग्जीक्यूट कला, सरला गोटे लाइन रो स्टेटमेंट। बुझी पड़लो, राइट? ओके वर्कफ्लो विषय कंप्लीट जानले। नेक्स्ट लेट्स सी हाउ वी कैन do the software installations. The software installations, don't think it is a complicated one. जदि आमे भाबिबा complicated then हमको exactly complicate ही लागि। तो Ansible documentations जेमति कहउतले आमे Ansible रो documentations follow करिबा, से documentations राइट से बहुत सारा informations देछि केमति आमे यूज करि पारियो, राइट? केमति installations आमे follow करि पारिबा। तो Ansible रो documentations आमे जदि जिबा completely ए पेज ता अछि, बट तमे केमति पाइबा सपोज सर्च करो, ओके दोन बते दोस केमति पाइबा इंस्टॉल सपोज Ansible on Ubuntu, मतलब Ubuntu रु सपोज इंस्टॉल करे अछि, सो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज तमे तारा docs.ansible.com तारा पाइज, अलगा सब अछि डिजिटल ओशन रो बाकी सब पाइजिबो, बट ए पेज को स्पेसिफिक पेज को तमे पळेबो। ओके तो एटा हला कोन तारा ऑफिशियल पेज, Ansible documentations ऑफिशियल पेज। तो एटी हमें देखिबा लेफ्ट साइड रे देखो इंस्टॉलिंग Ansible on specific operating system। तमे जदि फेडोरा लाइनक्स यूज करछो देन क्लिक ऑन दिस फेडोरा लाइनक्स, तमे फेडोरा लाइनक्स रो कोन केमति इंस्टॉल करावो कंप्लीट डिटेल्स। सेमति तमे यदि ईपेल यूज करिवो, ओपनसुसी, राइट, टम्बलवीड, तो ता पई इंस्टॉलेशंस देछि, उबुंटू पई, राइट, आर्क लिनक्स पई, डेबियन पई, विंडोज पई केमति इंस्टॉल करिवो, राइट, कंप्लीट डिटेल्स रे देछि। तो आमे कोन करबा एबे उबुंटू फॉलो करिबा, इंस्टॉलिंग Ansible on Ubuntu, लेट्स गो। तो उबुंटू पई कोन देछि एतिक स्टेप्स, जस्ट 3 स्टेप्स हमें यूज करबा। एटा तो हमर अपग्रेड अपडेट स्टेट रहला, ता पे हमें कोन करबा उबुंटू मशीन रो पैकेज मैनेजर ना हला कोन apt और apt-get apt-get और apt। ओके तो फर्स्ट चलो हमें गोटे कोन लाइनक्स मशीन्स नबा। तो ठीक गोटे लाइनक्स मशीन्स रन होची, लेट मी गो अहेड। तो काले टेस्ट सर्वर हमरा डिलीट टर्मिनेट कराई जायछि, राइट? तो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट वन मोर EC2 instances। तो हमें स्क्रैच नबा और तक इंस्टॉलेशंस करिवा केम देखिबा, ता सहित हम तुमको Ansible केमति कॉन्फ़िगर करिवो ता विषय हम तुमको बतै देबी, ठीक अछि? लेट्स गिव a name as Ansible Ubuntu नेली। तो 22 versions नेली, 22.04 LTS long term support। okay तो T2 micro, that's okay, no issues। go keep air select करो। सब तुमको बेसी बताऊनी जे
ऑलरेडी तमे जानी थियो मु जेनकिंस रो सिक्योरिटी ग्रुप यूज कली ऑलरेडी सेते डिटेल्स पोर्ट जहां हमको दरकार ऑलरेडी सेटअप अछि तो मु ता किछि सेटअप करियो पड़ियोनी राइट जो एग्जांपल हिसाब ऑलरेडी सेटअप अछि तो सेति पे हम नहीं गली सिलेक्ट हाउ कॉन्फ़िगर स्टोरेज मिनिमम 8 अछि तो टिके बढ़ाई दोछि 20 गीगाबाइट रो स्टोरेज नहीं गली ओके रूट वॉल्यूम नाउ लेट्स गो अहेड एंड लॉन्च इंस्टेंस अधिका टिके स्टोरेज नेला तमर टिके कोन स्पीड हबो राइट बहुत कम स्टोरेज नहीं तो स्टोरेज फुल हो गला पर तमर परफॉर्मेंस स्लो हो जिवो राइट वॉल्यूम स्टोरेज फुल हो परफॉर्मेंस लो हो तो से सब टिके हाई वॉल्यूम रखो मु एटी पई 20 देखो अप टू 30 जीबी हमर फ्री रहउची राइट फ्री टियर तो 30 जीबी मोर ऑलरेडी 20 जीबी रो गोटे सर्वर रन होउची तो मु आ गोटे 20 जीबी नहीं गली टोटल हो गला 40 जीबी 40 जीबी 30 जीबी अप टू 30 जीबी फ्री नेक्स्ट 10 जीबी आई हैव टू पे जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा 10 जीबी रो मुनेली राइट तापे मते पे करियो पड़ी so let's go ahead to check करिबा server run होउछ ना नहीं okay Ansible server started running now fine IP address copy कर देली next go to the PowerShell मु विंडोज डायरेक्ट लॉगिन करछु मु OpenSSH यूज करछु ओके तमे पुटी यूज कर परिबो नो प्रॉब्लम सिमिलर वेज बट कैन यूज पुटी आल्सो पुटी कोन कली OpenSSH यूज करछु SSH icon I certificate Ubuntu machine right Ubuntu @ IP address default user Ubuntu @ IP address enter yes done so just connected to the new machine तमे गोटे न्यू मशीन प्रोक्योर कले सेठी कनेक्ट कली तो हमर जो प्रोसेसर अछि राइट इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेट सेम फॉलो करबा फर्स्ट एट दोची कोन अपडेट करिया पई सो लेट्स गो अहेड एंड राइट sudo apt होची कोन ubuntu रो पैकेज मैनेजर सिमिलरली हमर amazon linux और CentOS रे कोन yum right yum is the package manager for amazon linux and CentOS and all right sudo apt यूज कली पैकेज मैनेजर अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट मु कर दोची बेसिकली जो अपडेट होची रियल टाइम रे तम कंपनी तमे अपडेट करिवनी राइट जेतु तमे गोटे कोनसी सर्वर रे काम करबा को जाउतिबो कोनसी सर्वर को डायरेक्टली तमे यदि अपडेट करिवो जहां भी पैकेजेस ऑलरेडी यूज होची एप्लीकेशंस यूज करची सेटा कोन अपग्रेड जदी हे जिवो इट विल इंपैक्ट द performance or it will impact the application may not run it will break okay so normally administrator mane sabu to block kari rakhi tandi we cannot directly update anything the upgradations patch update that gote specific time re specific process follow kari kara ja okay तो एटा मु जेतो हमरो एटा कोन R&D सर्वर बा ट्रेनिंग सर्वर मु डायरेक्टली अपडेट माउचिटी तो जब अपडेट आमे काई माउछ ना जहां भी पैकेज आउटडेटेड अछि ओल्ड पैकेज अछि तो सेटा कोन होबो ना न्यू जो सॉफ्टवेयर्स अछि न्यू पैकेज नुवा पैकेज को जोटा क्रिएट हेची बा किछ अपडेट अछि ना अपडेट हेची जेमति आमे विंडोज मशीन से हमरो अपडेट पई मागे राइट आमे रिस्टार्ट मारले अपडेट हे जाय ऑटोमेटिक इंस्टॉल करके सिमिलरली सेटा आमे लाइनक्स रे अपडेट करूची ठीक अछि जस्ट वेट फॉर सम टाइम 97% कंप्लीट हो गला तो डन 36.9 MB in 32 seconds तब बतवन ओके तो अपडेट हो गला तो नेक्स्ट स्टेज कौन स्टेप कौन दोची ना इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज कॉमन हमें सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज कॉमन को इंस्टॉल करिबा with apt install software properties common properties जहाँ अच्छी यूज करें तो common properties already the newest version तो माने दरकार भी किछि नहीं तो हमें चेक कर देले जे ऑलरेडी इंस्टॉल हे अछि हमरा दरकार नहीं आउ हमें कोन जानि छे Ansible आउ गोटे मेन कथा हम कहबे भूली गेले तुमको Ansible is built in Python right Ansible is built in
पाइथन तो हमरो जेनकिंस खुद बिल्ट हेची जावा रे राइट तो जेनकिंस को हमें रन करिया पे हम कोन जावा दरकार राइट जेनकिंस रन करिया पे हमको जावा दरकार सिमिलरली Ansible रन करिया को हमें पाइथन दरकार Python should be installed on your machines to run the Ansible ओके तो हमें देखिए फर्स्ट पाइथन इंस्टॉल हेची कि नहीं जदि पाइथन इंस्टॉल न हेची देन we'll go ahead and install Python. So let me do some changes here. Python check करता हमें कौन Python 3 मु चेक करछि Python version okay so Python 3.10 version update अछि okay Python 3.10 आना Python already install हेकरी केमती ऑलरेडी अछि इंस्टॉल हमें जो इमेज टा सिलेक्ट कले राइट हमें जो इमेज टा सिलेक्ट कले से इमेज रे ऑलरेडी पाइथन पैकेज हेकरी अछि राइट जो उबुंटू इमेज सिलेक्ट कले तो ऑलरेडी इंस्टॉलेशन अछि फाइन तबरे नेक्स्ट हमें कोन करबा ए जो रिपोजिटरी अछि ताको ऐड कर दवा ओके Ansible जो पीपीए रिपोजिटरी अछि ताको हमर सिस्टम रे ऐड कर दवा सॉरी कॉपी हलानी कर छिटा ओके सो इट सिंपली खाली ऐड हे जिवो ऐड हे गला पर हमें कोन करबा ए रिपोजिटरी टा ऐड आप रिपोजिटरी देखो ऐडिंग रिपोजिटरी ऐड हे गला पर हमें कोन करबा सिंपली जिबा इंस्टॉल करबा जो इंस्टॉलेशंस करबा एठी कोन होछि ना ए कंप्लीट रिपोजिटरी राइट देखो ansible.com just use kala github.com ansible community ppa issues complete repositories complete list jami.list ansible ubuntu ansible jami.list सब जगह डिसेबल करछि एठी गोटे एंट्री करछि सोर्स लिस्ट रे राइट तो बहुत सारा तार सेटअप ता से बैकग्राउंड रे कंप्लीट repository setup ता कर दोछि इस करि साला परे हमें कोन करबा वंस repository setup हे गेला हमें जिबा डायरेक्टली Ansible क्लिक कर Ansible इंस्टॉल तो Ansible जितबे हमें इंस्टॉल करियो से कोन करबा रिपोजिटरी रो से कलेक्ट करिवो इंफॉर्मेशंस एंड देन इट विल इंस्टॉल ओके कंप्लीट हे गेला राइट डन so adding trace back most recent calls there is error it should be error asila but should be fine I hope it should be gateway timeout okay the gateway timeout error asla हमें आउथरे ट्राई करिवा ओके जेतु एरर आसला माने मोस्ट प्रोबेबली काम न करि पारे राइट तो बेटर हमें आउथरे ट्राई कर दो किछि इशू पाई जस्ट नेटवर्क इशू पाई गेटवे टाइम आउट एरर आसला ओके तो वर्तमान डन देखो जेतो जमा कंफ्यूज होबनी फर्स्ट जेतो इंस्टॉल करिवो ना सब एरर को देखुतिबो एटु हमें जेतो फर्स्ट रिपोजिटरी ऐड करले एटी जेतो हमें रिपोजिटरी टा ऐड करले कोन असला मोटे एरर थ्रो कला राइट से कोन एरर थ्रो कला सेम जे एरर को पड़िया सर्वर एरर्स एचटीटीपी एरर 5 गेटवे टाइम आउट माने से तो कनेक्ट को जेतु सर्वर को कनेक्ट कर रिपोजिटरी ऐड करूची राइट तो कोन गेटवे टाइम आउट हैला कनेक्शन टाइम आउट हैला तो एटी देखे दला 504 गेटवे टाइम आउट तो इस टाइम रे हम इंस्टॉल करथां Ansible देन हेई नथांता काम करि नथांता राइट तो मु कोन करना आउथरे ई टाइम रे जदी एरर आछी तो मैं आउथरे ट्राई करियो कारण नेटवर्क जो गेटवे टाइम आउट आसला सेटा आउथरे क्लियर हो जाए मोस्ट ऑफ द टाइम तो एठी आउथरे जले मैं एग्जीक्यूट कले कंप्लीट पैकेज डन हे गेला एबे कोन करियो ना हमें जो पैकेज को हमें लिटरली इंस्टॉल करबा Ansible पैकेज को राइट where install icon yes okay see कंप्लीट ये जो रिपोजिटरी जोड़ा ऐड हैला राइट से रिपोजिटरी से कोन कला ये Ansible पैकेज को आनी करी इंस्टॉल करूची 31% सो एटा टिके टाइम नो जेतु बडो पैकेज अछि टिके टाइम नो ओके okay just hold on for a few seconds let it complete
इटी कला फर्स्ट कौन करना पैकेज सब को डाउनलोड कर देला राइट डाउनलोड कला पर तापर कोन सिलेक्टिंग करी सेटअप करूची राइट तापर जा भी सेटअप करिया कथा से करूची सेटिंग अप Ansible वर्तमान हमर Ansible कंप्लीट इंस्टॉलेशन सरी गेला चेक करबा Ansible को वर्जन हमर इंस्टॉल हैला Ansible हम चेक करबा Ansible आइकन वर्जन ओके सी Ansible 2.17 core 2.17 इंस्टॉल ହେଇଛି ଆଉ config file तार लोकेशन दछि को लोकेशन रे तार config file स्टोर होइछि etc Ansible राइट हाउ configured module तार कंप्लीट मॉड्यूल लिस्ट देखछि को जगह रे कलेक्शन को लिस्ट रे अछि कोठी मॉड्यूल्स रोछि Ansible पैकेज ता मॉड्यूल को लोकेशन रे कंप्लीट डिटेल्स देखिदेला कौन पाइथन वर्जन यूज होछि जिंजा वर्जन कौन यूज होछि राइट Ansible रो एग्जीक्यूटेबल लोकेशन कोठी रोछि मुझे एटू Ansible मारिली राइट तार लोकेशंस अछि यूजर बिन Ansible राइट ये Ansible ता वर्जन चेक कंप्लीट वर्जन रे हमर कंप्लीट डिटेल्स पाइ तो एबे Ansible इंस्टॉलेशन सरला परे हमें वर्तमान हमर फर्स्ट थिंग आछुछि बुझिया पडिबो Ansible तार कॉन्फ़िगरेशंस फाइल कोठी रखुछि हां etc Ansible भितर ओके त हमें वर्तमान जदि cd etc Ansible भितर का हमें जिबा वर्तमान एठी तीनटा गुटे फोल्डर रोल्स रोछि त बिषय हम परे जानिबा होस्ट आउ ansible.cfg ए दुईटा फाइल रोछि तो ए दुईटा फाइल कोन ना गुटे फाइल हैला हमर कॉन्फ़िगरेशंस फाइल गुटे फाइल हैला हमर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जोटा कि हमर Ansible.cfg एटा हमर कोन कॉन्फ़िगरेशन फाइल configuration file आउ गोटे रोची कोन होस्ट एटा हला हम कोन इन्वेंटरी फाइल हम इन्वेंटरी विषय कथा होतले राइट एटा हला हमर इन्वेंटरी फाइल ए फाइल कोन सब कंटेन करछु म तुमको देखे देबी इन्वेंटरी फाइल बाय डिफॉल्ट हमें जतले Ansible इंस्टॉल करिवा राइट दिस इज ए डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल default inventory file ओके तो हमें जतो इंस्टॉल करिबा लिनक्स फाइल नाटा हमें चाहिले जाकू एग्जीक्यूट करबा माने डिफरेंट ना चेंज करबा पई देन हमें कोन करबा डिफरेंट ना देबा सपोज मु दली माय इन्वेंटरी बा हमरो एप्लीकेशन वाइज रे दे दली माय ऐप इन्वेंटरी किछ भी ना दे दली xyz तो ये नाटा को हमें कौन करबा जेतो दली हमें ये नाटा को हमें सेटअप करबा कॉन्फ़िगरेशंस फाइल ओके अब विषय हमें परे जानिबा बट बेसिकली मने रखि थाओ ए जो दुईटा फाइल विषय हमें जानले Ansible.cfg और होस्ट जेतो हम इंस्टॉल करिया फर्स्ट ए दुईटा फाइल ही रहइबो तो गोटे फाइल रहला Ansible.cfg होची हमर कॉन्फ़िगरेशन फाइल और होस्ट हला हमर इन्वेंटरी फाइल ओके तो let's go ahead and check what is this Ansible CFG contains कौन कंटेन को चाबी तो हमें देखिबो तो मुझे दी फाइल को जीबी वर्तमान Ansible.cfg को vi Ansible.cfg ओके फाइन सो एठी कोन किछि नाही जस्ट हमरो किछि कमेंटेड इंफॉर्मेशंस दैछि जोटा कि कोन दैछि सिंस Ansible 2.12 टू जनरेट ओके आगुरु कोन होतला ना पुराना वर्जन्स रे 2.10 to 2.9 until 2012 राइट तो होतला ना हमें तो इंस्टॉल करूतले सी गुडा हमको बाय डिफॉल्ट गोटे कोन Ansible.cfg कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल हमको दे दोतला तो सेते हमको जहा दरकार थिला कमेंटेड फाइल दोतला जहा दरकार थिला हमें यूज करूतले बट एबे कोन करछि ना Ansible तुमको ऑप्शंस दोछि जे तमे निजे Ansible.cfg फाइल क्रिएट करिया पई तर दुईटा ऑप्शंस दोछि कोन Ansible config init देखो ये सब कमेंट हैश सला कोन सब कमेंट हेगी अछि राइट त हमें जदी एटा यूज करिबा कोन कहछि टू जनरेट एन एग्जांपल config फाइल गोटे config फाइल एग्जांपल यूज करिया पई हमें ए ऑप्शन Ansible-config कमांड गोटे यूज करिबा init यूज करिबा टू इनिशियलाइज
हाइफेन हाइफेन डिसेबल्ड यूज करबा कोन कमेंट करबा एटी जेंति हमर कमेंट हेइ ग्री अछि ना तटा कमेंट हेइ परबो तापर एटा कोन ए ऑप्शन टा कोन की कहि पारे तम भितरु ए ऑप्शंस टा लाइनक्स शेल स्क्रिप्ट हमें पढ़ी छे राइट ग्रेटर देन सिंबल कोन पय यूज हुए Redirection. perfect so it's being used to redirect the output to a file redirection पई हमर यूज होची तो हमें सिंगल ग्रेटर देन सिंबल माने एठी कोन ओवरराइट कर दो ansible.cfg जो अच्छी फाइल कंटेंट करची आर आउटपुट टा कोन करिवो ना ansible.cfg रे ओवरराइट हे जेबा राइट करिवो राइट तो हमें जे चाहू छे गोटे एग्जांपल कॉन्फिग फाइल सिंपल एग्जांपल फाइल विथ ऑल डिफॉल्ट सेटिंग्स सहित दरकार कमेंटेड हेतिया कमेंटेड आउट देन हमें ए कमांड यूज करी यूज करे तापर आउट ऑप्शंस देछि also you can now have a more complete file by including existing plugins किसी existing plugins तमे जे चाहछो including करिवा पई then you can use this command तापर greater than ansible.ch ओके तमे चेक कर दो आ ता छडा तमे जे चाहन एटा यूज करे पे देन तमे कोन कोन गिटहब लिंक उठे देछि ता दरु तमे कोन ansible.cfg को डाउनलोड भी करि परिबो डाउनलोड करी कॉपी पेस्ट कर दबो सर्वर एटा भी हे जीवो राइट मल्टीपल वेज रे से देजन आमे केमते कॉन्फ़िगरेशंस फाइल गोटे क्रिएट कर परिबा तो मो आमे वर्तमान ए सेकंड ऑप्शंस जोडा देछि हैपन टी ऑल एटा यूज करिबा ओके लेट मी कम आउट मो एठी कोन ना ग्रेट सिंगल ग्रेटर देन आउ यूज करिबि मो एठी डबल ग्रेटर देन यूज करिबि ओके यूज कली डबल ग्रेटर देन सिंबल ansible dot cfg ansible dot cfg ओके तो डबल ग्रेटर देन कोन करिवो सिंगल ला कोन ओवरराइट करिवो डबल ग्रेटर देन अपेंड करिवो राइट फाइल को ओवरराइट करिवो राइट एटा एंटर ओके परमिशन डिनाइड तो काई परमिशन डिनाइड कहला ansible.cfg टी कोन रूट यूजर आईडी कोन अछि यूजर आउ ग्रुप कोन रूट अछंती तो मु कोन नॉर्मल ubuntu यूजर रे एग्जीक्यूट करूची काम कलानी तो मेठी कोन करि परिबी sudo निजे को रूट बनै देबी किबा sudo यूज करी करी sudo ए कमांड यूज करी कर परतांती तो डायरेक्टली मुझे तो मल्टीपल अदर कमांड्स मते एग्जीक्यूट करिया अछि तो बर्तन निजे को रूट बनै देली राइट बाय यूजिंग sudo su रूट आसिगली बर्तन ए कमांड आउथर एग्जीक्यूट करिया देन एंटर सरला वर्तमान हमर ansible.cfg फाइल कोन सब जक अपेंड हे गेला आर आउटपुट टा वर्तमान अपेंड गेला लेट्स सी देखो फाइल साइज केते बढी गेला राइट लेट्स ओपन दिस फाइल pi सी कंप्लीट सेटअप टा पूरा कॉन्फ़िगरेशन बट एटा किछि यूज नाही कारण सब जक कोन कमेंटेड हेकरी अछि एथि पई कमेंट करछि तमरो जहा दरकार तमे सेटा को अनकमेंट करिवो आउ यूज करिवो ताको सेटा तमे अनकमेंट करिवो आउ यूज करिवो राइट तो वर्तमान हमें कोन करिवो हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमें अनकमेंट करिवा ठीक अछि तो हमर कोन ansible.cfg विषय जस्ट बेसिक नॉलेज पाइलो लेट्स मूव ऑन टू होस्ट्स फाइल जोटा कि हम इन्वेंटरी फाइल डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल ना कोन हैला होस्ट्स एटा को हमें रिनेम मल्टी अलगा ना भी रखि परिया कि असुविधा नहीं मल्टीपल इन्वेंटरी फाइल भी क्रिएट करि परियो तो बते देबी धीरे धीरे हमर अपकमिंग क्लासेस रे पूरा डिटेल्स रे बते देबी तो वर्तमान हमर ए जो इन्वेंटरी फाइल हमर अछि ए इन्वेंटरी फाइल टा हमें देखिबा एटा कोन ही सेटअप ही अछि इन्वेंटरी फाइल देखो ये इन्वेंटरी फाइल भी ऑलरेडी कोन सब जगह कमेंट हेकरी अछि आ तार भी एग्जांपल दे देछि केमति तमे इन्वेंटरी फाइल को सेटअप करी रखिबो राइट कंप्लीट डिटेल्स दे देछि त हमें वर्तमान कोन करिबा ना ई जो इन्वेंटरी फाइल अछि ता ऊपर हमें काम करिबा त ता पूर्वरु कॉन्फ़िगरेशंस फाइल को आउथरे जिबा सेठी किछि चेंजेस करिबा ओके कौन चेंजेस करिबा फर्स्ट बेसिक चेंजेस गोटे हम करे देखे देबी तुमको हमरो ए ansible कॉन्फ़िगरेशन रे कोन इन्वेंटरी फाइल नाटा सेटअप करियो पड़िबो ओके तो सेटा कोड सेटअप करिबा ansible जिबा एठी कोन सब जगह कमेंट हेछि हमर ansible टोटल काम करिवनी जेतु
मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल रे ही हमर Ansible बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही Ansible काम करियो जदि कॉन्फ़िगरेशन फाइल किछि नथिबो देन काम करिवोनी राइट तो मु बर्तन कोन कहिबि हमर इन्वेंटरी फाइल जो अछि सर्च करबी इन्वेंटरी ओके एटी देखो हमर इन्वेंटरी फाइल पळे आसला इन्वेंटरी ताको एबे अनकमेंट कर देली तार कीवर्ड कोन अछि इन्वेंटरी इक्वल टू कोन etc Ansible hosts ई फाइल ना हला होस्ट जोटा कि हमर इन्वेंटरी फाइल ना तमे जे मल्टीपल इन्वेंटरी सोर्स करिया पे जाउ छ से कोन कहूची ना कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ Ansible इन्वेंटरी तमे जदि मल्टीपल इन्वेंटरी लिस्ट यूज करछो देन कॉमा करिकरी गोटे कॉमा दे दबो कॉमा परे अलगा इन्वेंटरी फुल पाथ दे देले से नै जिवो जेटा हम परे देखिबा मल्टीपल इन्वेंटरी केमती काम करछि वर्तमान सिंगल इन्वेंटरी हम सेटअप कले राइट सिंगल इन्वेंटरी सेट कर दो देन एती खाली चेंज करछो बाकी सब परे देखिबी परे बुझे देबी केमती कोन यूज होछि डन हमें ansible.cf चेंजेस कले नेक्स्ट कोन होछि ना हम इन्वेंटरी फाइल रे किछि इन्वेंटरी माने सर्वर इंफॉर्मेशन नोड मशीन राइट इन्वेंटरी कोन गोटे से कलेक्शन ऑफ सर्वर्स इट कंटेन्स द सर्वर इंफॉर्मेशंस राइट ओपन कली एटा जहां अछि कंप्लीट डिलीट कर दो मते किछि दरकार नै ठीक अछि तो वर्तमान एठी मते कोन दबार अछि ना गोटे सर्वर नाटा देबी जो सर्वर को बा नोड नाटा देबी जो नोड को मु कनेक्ट करिवि ओके जो नोड को मु कनेक्ट करिवि वर्तमान तुमको बहुत बहुत वेरी वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशंस वर्तमान दोछि तापर हम टिके एडवांस बा इंटरमीडिएट लेवल को पढिया केमते इन्वेंटरी केवल इन्वेंटरी ऊपर ही काम करिया पे हम बहुत टाइम लागियो ओके इन्वेंटरी सेटअप करबा इन्वेंटरी कंप्लीट मैनेजमेंट करबा तापर बेसी टाइम लागियो तो मु जस्ट सिंपल इन्वेंटरी बतै दोछि केमती कोन तमे यूज करबा तो वर्तमान इन्वेंटरी हमें कोन जानिले कोन हमर जो नोड बा सर्वर इन्फॉर्मेशंस को हमें इन्वेंटरी रे स्टोर कर रखिया धर मु गोटे वर्तमान मो मास्टर मशीन से बा कंट्रोल मशीन रो मु चाहूची गोटे सर्वर को कनेक्ट करिया पे सपोज हमर एटा हला मु ये जो लैंप सर्वर अछि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्वर ए सर्वर रो कनेक्ट करिया पे चाहूची राइट मु ये सर्वर रो कनेक्ट कोन करे तमे एक आईपी एड्रेस नै करी कॉपी कर दो राइट आईपी एड्रेस ने आईपी एड्रेस ने खाली आईपी एड्रेस पेस्ट कर देली ओके एटा खाली जस्ट एटा आईपी एड्रेस पेस्ट कर देली तो जत्ते भी आईपी एड्रेस तमर दर 15 टा अछि 20 टा अछि बा 50 टा अछि सब जगह लाइन में सेव कर दो तब एग्जीक्यूट कले से सब जगह गोटे गोटे नै काम करिवो हला एटा हला जस्ट एडिंग द नोड मशीन्स तब हम परे देखिबे केमती कोन ताको सिस्टमैटिक वे रे इन्वेंटरी मैनेजमेंट करिया ओके तब हम लाको सेव कर ठीक अछि ansible.cfg रे मु पाथ दे देली कोडी फाइल अछि आउ दे देली तो वर्तमान मु कोन करछि चेक करिबा जो सर्वर टा मु ऐड कली राइट से सर्वर टा को हमें पिंग करी देखिबा बा चेक करिबा किंतु Ansible काम करछि ना ता पई कमांड हमें कोन यूज करिबा Ansible कमांड ओके Ansible बहुत सारा कमांड्स अछि से कमांड लिस्ट ऑफ कमांड्स हमें धीरे धीरे सिखिबे ता सहित हम तुमको बते देबी केमिति तमे कमांड्स लिस्ट जानि परिबो केमिति तबे यूज करि परिबो कंप्लीट डिटेल्स रे हम तुमको हम अपकमिंग क्लासेस रे पूरा डिटेल्स रे बुझे देबी ओके तो वर्तमान मु चेक करछि कोन कोन सर्वर हम पाखरे हमरो इन्वेंटरी ओपन न करी वी एडिटर यूज करी हम चेक करि परिबा कोन करबा Ansible ओके यूज करिबा list okay hyphen list all देखो मु कोन कली Ansible hyphen list all माने कोन जहां भी होस्ट इंफॉर्मेशन अछि सर्वर इंफॉर्मेशन अछि सब शो कर दला माने गोटिए देइछे तो गोटिए अछि जदि मु अलगा किछि देइथानी आउट 20 टा 50 टा देइथान तो सब जगह शो करतांता राइट तो एटा आहुरी भी डिफरेंट वे रे हमें जेतले इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिखिबा ग्रुपिंग सिखिबा सेतले ग्रुपिंग हिसाब रे मु चेक करी तुमको बतै देबी ओके तो वर्तमान हमें कोन देखले तो ए सर्वर टा एक्चुअली काम करूची ना नाही माने लाइव अछि ना नाही मु कोन करबी गोटे मॉड्यूल यूज करी एडॉक मॉड्यूल यूज करी एडॉक विषय भी हमें जानिबा गोटे कंप्लीट क्लास अछि केवल एडॉक विषय रे हम करे सिखिबा हाइपन एम पिंग
जस्ट बेसिक जानी था टेस्ट करछे तापर हमें सिखिबा हाइफन एम पिंग ऑल मार दोछ माने गोटे ही सर्वर अछि तो ऑल सर्वर मार से पिंग कला यस देखो तो कौन कला आमर सर्वर को देखो मु किछि यूज कलिन राइट आंसिबल हाइफन एम पिंग ऑल तो माने हाइफन एम हला गोटे मॉड्यूल यूज करछे पिंग हला गोटे मॉड्यूल हमें जानछे लाइनक्स रे पिंग हला गोटे कमांड टू पिंग ए सर्वर राइट तो हमें आंसिबल कोन करछे पिंग मॉड्यूल यूज करछे टू पिंग ए सर्वर राइट कौन सर्वर पिंग करियो से ना मु जो हमें ऑल दे दे ऑल सर्वर्स अवेलेबल इन द इन्वेंटरी तो इन्वेंटरी हमर केवल गोटे सर्वर अछि तो से कोन करना ए गोटे सर्वर पिंग मु जदि वर्तमान इन्वेंटरी आउ गोटे सर्वर ऐड कर देबी सपोज हां एठी मु आउ गोटे आईपी एड्रेस दे दोची सपोज किछ भी गोटे डिफॉल्ट अलगा आईपी एड्रेस जोटा कि एक्जिस्ट नाइ ओके दे दे ओके तो आउ गोटे मु डोमेन नेम दे दोची सपोज ranjitswai.com गोटे डोमेन दे देली देखो आईपी एड्रेस डोमेन तुम जहां भी दे पारियो कारण सर्वर इन्फॉर्मेशन राइट नोड इन्फॉर्मेशन मशीन इन्फॉर्मेशन हमें सर्वर नाटा दोचे डोमेन बा आईपी एड्रेस तुम रखि पारियो सेव कली तो वर्तमान हमर इन्वेंटरी कोन तीनटा नोड इन्फॉर्मेशंस रहियला राइट मु जदि एबे लिस्ट मारिबी सो गल हमर कोन तीनटा राइट तो मु जदि एबे पिंग ऑल कली तो कोन हो ठीक से कोन करियो ना तीनटा जाक सर्वर को पिंग करियो फर्स्ट सर्वर पिंग कला अनरीचेबल एटा को अनरीचेबल करछि माने कनेक्ट करि पानी तापर सेकंड भी पिंग कला कोन कहला अनरीचेबल थर्ड भी पिंग कला अनरीचेबल काहे कि ना आंसिबल सर्वर रु हमें ए पर्टिकुलर सर्वर को कनेक्ट करि पारु ने ए पिंग र काम कोन हैला ए पिंग र काम न हो जे देखो लाइनक्स रे जो पिंग कमांड होची से पिंग कमांड हम जदि यूज करिबा से पिंग कमांड होची कोन टू चेक द सर्वर स्टेटस सर्वर हेल्थ अलाइव और नॉट तो हमें जदि पिंग करिबा सर्वर को तो सर्वर हमें गोटे रेस्पॉन्स आसीबो देखो सर्वर चल ता माने कोन बे सर्वर हार्टबीट ता चलीची ता माने ranjit.swai सर्वर लाइव अछि काम करूची राइट एटा ला लाइनक्स रे में पिंग कले बट इठी जो हमें मॉड्यूल यूज कले पिंग ये पिंग मॉड्यूल और ये पिंग कमांड इज टोटली डिफरेंट राइट कंफ्यूज जमा हबनी पिंग कमांड है गोटे नेटवर्क कमांड लाइनक्स रे बट इटी एंसिबल जो पिंग कमांड है एटा कमांड नो गोटे मॉड्यूल टा से मॉड्यूल द्वारा हमें कोन चेक करू ये सर्वर को हमें कनेक्ट करि पारुछे ना नाही कोटू एंसिबल कंट्रोल मशीन रु ए पर्टिकुलर सर्वर को हमें कनेक्ट करि पारुछे ना नाही हमें पिंग मॉड्यूल यूज करिया ओके तो हमें कनेक्ट करि पारुने सब अनरीचेबल हेउची तो वर्तमान मु कोन करछि ना तुमको बतेबी केमिति हमें कंट्रोल मशीन को नोड मशीन कनेक्ट करिवा सेटा ही हमर मेन माने फर्स्ट थिंग कारण हमें 100टा मशीन माने 100टा मशीन को केमिति कनेक्ट करिया कंट्रोल मशीन सेटा हमें सेटअप करी देखिबा मु तुमको दुईटा तीनटा वे रे बतेबी केमिति कनेक्ट करिवो आ जोटा बहुत माने तीनटा को वे भी तुम जानी था बट गोटे वे रे हम काम करिवा तीनटा को वे बतेबी बट हम गोटे वे रे काम करिवा ठीक अछि तो फर्स्ट थिंग होची ओके जे तुम दी तीनटा केते एक्स्ट्रा दुईटा नोड दे देली जोटा कि हम एग्जिस्ट नाइ तो डिलीट कर दोछ के अननेसेसरी फेल हो राइट माको डिलीट कर दोछ दरकार नै हम गोटे सर्वर रे काम करिया गोटे नोड रे सेव कर दोछ ओके तो फर्स्ट थिंग हला हमें कोन ना गोटे कनेक्शन एस्टैब्लिश करिवा कनेक्शन एस्टैब्लिश करिया का सहित ना कंट्रोल मशीन सहित गोटे कनेक्शन एस्टैब्लिश करिवा हमर रहिला Ansible सर्वर बा हमर एटा कोन कंट्रोल मशीन जेटा हमर कंट्रोल मशीन बा हमें कहि परबा कंट्रोलर ता सहित हमर जो नोड मशीन हमें क्रिएट करछे ए नोड मशीन को हमें वर्तमान कनेक्ट करिवा नोड मशीन को कनेक्ट करिवा तो तापे कनेक्ट करिया पे हमें कोन जानिछे थ्रू SSH बिकॉज़ हमको एटा एजेंटलेस थ्रू SSH हम कनेक्ट करिवा तो SSH कनेक्ट करिवा पे हम कोन दरकार आइदर कोन दरकार यूजर आईडी पासवर्ड और हम दरकार की बेस्ड ऑथेंटिकेशन आइदर पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशंस गोटेला कोन पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशंस आ गोटेला कोन
की बेस्ड ऑथेंटिकेशंस यूजिंग की केमते हमें कनेक्ट करि परिबा तो पासवर्ड बेस्ड इज नॉट सो सेफ्टी हमें यूज करबा की बेस्ड ओके तो बर्तमान देखिबा की बेस्ड रे हमें केमिति यूज करी कनेक्ट करिवा तो फर्स्ट थिंग हला हमें गोटे की जनरेट करिवा कोडू आंसिबल रु गोटे की जनरेट करिवा एक पब्लिक कीटा जनरेट करिवा ए पब्लिक कीटा को हमें कोन करिवा नोड मशीन रे सेटअप करिवा कीटा सेटअप हे गला परे कोन करिवा ना आंसिबल कंट्रोल ऑटोमेटिकली कनेक्ट करिवा कोन नोड मशीन को राइट तबे सिखिबा देखिबा तीनटा वे रे मु तुमको बतेबी फर्स्ट दीटा वे गोटे मैनुअली सेटअप करिवा गोटे यूजिंग कमांड आंसिबल लाइनक्स कमांड यूज करिवा आ गोटे हमें की यूज करी केमती सेटअप करिवा ठीक अछि तो फर्स्ट बेसिक वे मु बतै दोछि मैनुअली सेटअप केमती करिवा ओके आज दुईटा देखे देबे आ गोटे थर्ड जोटा हम रेगुलर करिवा प्रैक्टिस सेटा हम मु पर नेक्स्ट क्लास टाइम बतेबा ठीक अछि तो फर्स्ट की बेस्ड रे तो फर्स्ट थिंग हला हमें आंसिबल रो हमर नोड मशीन को कनेक्ट करिवा तो सेति पय हमें कोन करिवा ना फर्स्ट कोन करिवा आंसिबल रे कोन करिवा गोटे की जनरेट करिवा आंसिबल सर्वर रे ओके बर्तमान मु रूट यूजर रे लॉगिन करिछि तो रूट यूजर रे मु जदी यूज करबी ssh हाइफन की जेन ssh हाइफन की जेन तो हमें ssh रे गोटे की जनरेट करिवा की जेन माने की जनरेट करिवा ओके एंटर माने वो किछि दवा दरकार नै खाली ssh हाइफन की जेन एंटर तो एठी फाइल ना दो जदी की फाइल ना किछि तमे सेव करिया पय चाहौ छ तमे एठी फाइल नाटा देई परिबो तो मु वर्तमान एठी कोन ना जस्ट सिंपल एज इट इज रखी दउची बाय डिफॉल्ट ता ना हला id_rsa मु किछि चेंज करूनी id_rsa रहउची पास फ्रेज पासवर्ड फ्रेज किछि दवा चाहौ छ पासवर्ड प्रोटेक्टेड छाड़ दोची मु किछि दवा चाहूनी डन सिंपल हमर गोटे की जनरेट हे गला प्राइवेट पब्लिक की पीपी के जनरेट हे गला sorry this is not ppk simply private और public की दुईटा फाइल जेतो हमें ssh की जेन यूज करबा कोन करबा ना दुईटा फाइल जनरेट करबो फाइल कोठी जनरेट करबो ना सेही यूजर रो होम डायरेक्टरी यूजर होम डायरेक्टरी वर्तमान कोन /root राइट सेही मन रखि दो सेही यूजर रो होम डायरेक्टरी रो .ssh फोल्डर .ssh फोल्डर है कोन गोटे हिडन फोल्डर राइट डॉट अछि माने लाइनक्स रे डॉट हला हिडन फोल्डर ssh भीतर रखली ता भीतर जिबी एबे pwd मारी देखो root.ssh ए फोल्डर भीतर डायरेक्टरी भीतर चेक करो देखो कोन id_rsa id_rsa pop तो एटा हला id_rsa हला प्राइवेट की एटा हला पब्लिक की .pub हला पब्लिक की तो हमें वर्तमान कोन करबा ना ये जो पब्लिक की टा को प्राइवेट की शेयर करिवनी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ओके प्राइवेट की इज वेरी secure you should not ever share this private key to anyone okay you never share this one वर्तमान में कोन कली एटा को तार कंटेंट ये जो पब्लिक की रो कंटेंट कोन अछि देखो एटा हला पब्लिक की टा राइट आकु मु वर्तमान कोन करबी ना कॉपी करी करी नै करी से नोड मशीन रे कनेक्ट करिनी राइट तो नोड मशीन को हमें कनेक्ट करैटा हला हमर मास्टर मशीन मैं नोड मशीन को वर्तमान कनेक्ट करिवा ओके ssh -i नोड मशीन को कनेक्ट करे तो नोड मशीन हमर कोन ए सर्वर ता थिला ओके तो rb jenkins server एटा भी ubuntu machines अछि ओके देन सर्वर कनेक्ट कली एबे कोन करछिन से सर्वर रो रूट यूजर को पळेबी sudo su देन रूट यूजर को पळेली ए रूट यूजर रे एठी भी तारो .ssh फोल्डर थिबो डेफिनेटली राइट एटा ला .ssh ला हमरो ssh जो रोच सर्विस तारो हिडन फोल्डर ओके ता भीतर एठी देखो गोटे ऑथराइज्ड अंडरस्कोर की फाइल अछि ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज फाइल तो ये ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज फाइल रे मते कोन ता पेस्ट करया अछि कोन पेस्ट करबी ए जो पब्लिक की टा मु
जनरेट करथली ता पूर्वरु एठी मु कोन करथली ऑलरेडी पूरा ऑथराइज्ड कीटा कोन पूरा ओपन अछि लेट इट बी ओपन नो प्रॉब्लम बट आमे कोन केवल यूजर्स द रूट अकाउंट शुड गेट दिस ऑथराइज्ड तो मैं कोन को चेंज कर दोचे सेल्स मोड एटा मु लास्ट केबे गोटे चेंज करितली किछि गोटे काम पई तो सेटा अछि मु आपको चेंज कर दोछि तो तुम जानिछो केमति चेंज करा हुए परमिशंस राइट एटा फाइल परमिशंस त मु देली केवल बर्तन मु एबे जदी फाइल परमिशन चेक करि देलो कोन खाली यूजर रो रीड राइट रहला बाकी कार परमिशन नाही यूजर बर्तन की रूट आउ केही किछि एक्सेस करि परिबेनी फाइल को एटा एक्चुअली सिक्योर वे रे हम सिक्योरिटी पर्पस तुम याको चेंज कर दबो ओके फाइन तो मु बर्तन कोन करना आई जो पब्लिक कीटा कॉपी कली ओके केयरफुली कॉपी पूरा स्टार्टिंग रू एंड पर्यंत किसी एक्स्ट्रा स्पेस नबनी पूरा कॉपी करिवो एठी के आसीबो एई ऑथराइज्ड की फाइल टाको ओपन करिवो ओके एठी ऑलरेडी गोटे की थिवो सेही मशीन रो की ऑलरेडी थिवो तबे कोन करिवो तळु को आसीकरी एठी लास्ट लाइन रे तळे कोन कर कीटा पेस्ट कर दो पेस्ट कर देली सिंपल राइट देन फाइल टाको सेव कर देली डन फाइल टा हमर सेव हो गला तो वर्तमान मु जदी एटू मैनुअली फर्स्ट हमें टिके ट्राई करबा देखिए सर्वर को हमें कनेक्ट करि पारुछे ना नाही कोडू कंट्रोल मशीन रू राइट तो मैं एटी कोन करछि आईपी एड्रेस नली नोड मशीन रू कंट्रोल मशीन को जिबा एटी कंट्रोल मशीन रू मु जदी एसएसएच खाली दोछि रूट @ वर्तमान रूट देली जेतु रूट रो की हमें शेयर करछे आ तार पब्लिक आईपी देली राइट कार नोड मशीन रो राइट हिट एंटर सी आमे बिना पासवर्ड रे वर्तमान खाली की सेटअप पब्लिक कीटा मु शेयर करछि राइट शेयर कर दला माने सी कोन मते अलाउ कर दला कनेक्ट करिया वर्तमान मते अलाउ कला कनेक्ट करिया तो एमती कोन हमरा एक्चुअली की शेयरिंग पब्लिक की शेयरिंग रे दैट इज कॉल्ड की बेस्ड ऑथेंटिकेशन माने गोटे लाइनक्स सर्वर रु आ गोटे लाइनक्स सर्वर को केमती की शेयर करी पब्लिक की शेयर करी तमे कनेक्ट करियो ओके तो एटा बहुत इंपोर्टेंट गाइस ओके मन रखितो तापर हमें कोन करबा एबे कनेक्ट हे गेला एबे चला हमरो जो Ansible ता अछि हमें एटा एग्जीक्यूट करबा लास्ट टाइम एग्जीक्यूट करतले कोन कनेक्ट हे नथला तो वर्तमान एटा हमें एग्जीक्यूट करबा ओके लेट्स गो कोडिंग जे हमें cd etc Ansible फोल्डर हम सब कुछ तो एटा अच्छा एटा हम सर्वर कनेक्ट करछ राइट एग्जिट कर दली जे तो हमें 186 को कनेक्ट करतले वर्तमान हमरो Ansible कंट्रोल मशीन को हमें पळे आसले तो मैं ठीक कोन करबी cd etc Ansible फोल्डर जे राइट हम होस्ट अछि वर्तमान मु जदी यूज करबी कमांड Ansible -m ping all ओके देखो एटी कोन देखला सक्सेस आगुरु लिखुतला कोन नॉट रीचेबल अनरीचेबल राइट सर्वर वाज अनरीचेबल एबे कोन करछि सक्सेस आ तारा रिजल्ट दोला पिंग आ आंसर दोछि पंग पिंग पंग मींस पिंग पंग बॉल जानितो राइट हम पिंग पंग बॉल गुटे कोन कोपाले से तुमको रिटर्न पळे आसो इमीडिएटली तुम जाई पको रेस्पॉन्स दे दो राइट इमीडिएटली रिटर्न्स तार आंसर से मान लिखछन पिंग पंग जे भी डेवलपर डेवलप बन करिछन Ansible they have written all this so we don't have to worry about it first thing ला हम देखले सक्सेस राइट तो एठी जानला तमे कोन केमिति की पब्लिक की शेयर करी हमें की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करिरा एटा हला गोटे वे सेकंड वे होची हमें जो कीटा हमें मैनुअली सेटअप कले कोन कंट्रोल मशीन रे गोटे की जनरेट कले एसएसएच की जेन यूज करी करी तापरे हमें मैनुअली लॉगिन करी कॉपी कले से दिनछटा हमें कोन करबा बाय यूजिंग ssh-copy-id एटा गोटे कमांड जोटा कि हमर एसएस एटा क्वेश्चन भी पचारि पारंती तमे यूज करी करी ssh-copy-id तापरे यूजर नेम @server जो सर्वर को कॉपी करिवो बा रूट से सर्वर कॉपी करिवो से कोन करिवो ना पर्टिकुलरली से पब्लिक आईपी टा से कॉपी करतो बट एती कोन होछ ना तुम बहुत सारा सेटअप आ कॉन्फ़िगरेशंस करिवो पड़िवो सब मैक्सिमम टाइम रे काम करेनी तुमको सेटअप करिया पड़े बहुत रिगोरस सेटअप यू नीड टू डू दैट
किसी चेंजेस एसएसएचडी रे सर्विस रे किसी चेंजेस करिया पड़िबो रिस्टार्ट करिया पड़िबो तापर काम करियो बट मैनुअली कनेक्ट कर देले तो मैनुअली आमे तले कनेक्ट कले कोन एटा इजी लागिला हमकु जेतु एठी केवल गोटिए सर्वर अछि राइट मैनुअली कनेक्ट कले कॉपी पेस्ट कले सेव कले टेस्ट कले देन जदि 50 टा सर्वर तांदा हम 50 थर मैनुअली कनेक्ट करिया पड़तांदा राइट so that's the wrong way to do the setups right तो मोटा हमें जानिले गोटे वे रे केमती हमें सेटअप करि परिबा आ गोटे रे एसएसएच कॉपी आईडी जेमती एसएसएच कॉपी आईडी रे हमें यूज करि परिबा कोन एकात्रे 50 टा सर्वर को पठे परिबा बट ताकू भी कॉपी करे गले तापे स्क्रिप्ट लिखियो पड़िबो दैट्स आल्सो अगेन डिफिकल्ट आ गोटे वे अछि जोटा हम तो नेक्स्ट क्लास रे बतेबी जेमती हाउ वी कैन use that key directly to connect to the multiple servers okay fine ता पूर्व हमको इन्वेंटरी ऊपर काम करिया पड़े वर्तमान कोन गोटे इन्वेंटरी रे हमें चेक कले गोटे इन्वेंटरी देखो एटी सक्सेस दोची मते सेस टाइम रे वीआई होस्ट्स यूज करि के वर्तमान मो आउ गोटे जेमति सपोज रंजित फाइंड आउट एटी देखे आपको पिंग करबा होच ना नै ओके लेट्स Ansible ping all so देखो एटी कोन हला गोटे सर्वर जोटा हम सेटअप करथिले सक्सेस देखला पिंग पंग राइट आ गोटे अनरीचेबल जते भी सर्वर अछि हमें टेस्ट कर पाबा ओके तो आज हम कोन बेसिक सेटअप्स इंस्टॉलेशंस बेसिक configurations Ansible configurations आउ इन्वेंटरी ऊपर काम कले इन्वेंटरी जस्ट 0.001% हम इन्वेंटरी विषय जानि छे इन्वेंटरी बहुत सारा इंफॉर्मेशंस अछि बहुत सारा सेटअप्स अछि बहुत सारा मैनेजमेंट अछि तो हम नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऊपर पढिया